जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी साधकों को जय गुरुदेव। आज हमारे साथ शिव सिंह जुड़े हैं यूएसए मिशिगन से। आज हम इनके साथ गुरुदेव के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ये अभी नए साधक हैं, कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं और बहुत ही समर्पित हैं। जैसे ही गुरुदेव से जुड़े हैं तो उनका समर्पण बस हो गया और इतनी जल्दी हमारे बीच में आ गया। नहीं तो लोगों को इतना टाइम लग जाता है, थोड़ा शर्मा शर्मी में रहते हैं या पीछे रहते हैं। तो ये हमारा भाग्य है कि नए नए साधक जुड़ रहे हैं और आज उनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे। हाँ जी, शिव सिंह आप बताइए, आप कैसे जुड़े हैं गुरुदेव से? जय गुरुदेव. So my wife, she was visiting for a very unfortunate situation in India for one of my sister-in-laws, whose husband passed away in a very unfortunate circumstances, and her sister Kavita Ji, who used to be there too, and she was part of this Jai Gurudev. So my wife, I think she got involved with the meditation and everything with her over there. And when she came back, so she asked me to join her. And I am a person when sometimes you might not like some things, but to make your family happy, there are certain things you do it because that is the right thing to do. So I joined her, and it seems to be there are many things. This is my personal belief. I think anything you do in your life, I think trust is the foundation of everything. And if you don't have trust, you don't go far in your life. And that's the reason. So anything you do, I think you have to trust. And I did, and so when I did it first time, so that there are certain things I felt that when you do the meditation, so you're feeling some things in your body, which is kind of you cannot explain in words. And it was a good experience, I would say. Me being a working person, it was hard for me initially to focus and kind of concentrate on certain things. And my mind was drifting to different things, but I kept trying because that's what it is. Like meditation is, it's a commitment, and you have to practice, and that's what it is. So like then, I think couple of weeks ago we were going on for some engagement party in our area, the place we live in. It's a pretty cold place during the winter time, so there was a heavy snow on the road. So when we were going to the engagement party, there was somebody who slid into the ditch, and we thought the police was there to kind of take their car out. So we were going there, and we were kind of chatting that these people are in the ditch. But when we were coming back, same place, so it's kind of a slippery place. So I brake a little bit, and then we were going in the same direction too. But my wife happens to be, so she was saying, "Yeah, Gurudev." So rather than us going in the ditch, so we took like a 360 turn. So we were going in the one direction, but once it was all said and done and our car stopped, we were going in a different direction. So we were not in the ditch, fortunately. So as I said, I think the belief, trust, I think that is everything. And one thing I appreciate about Guruji and his education, and most of our folks back home in India and in our culture, I think we don't appreciate much that he's not asking anything from anybody. So that in English, there is a four-letter word, KISS, and I would say like a keep it simple Skywalker. So he had made it,
so he has given you that uh, three three word mantra, and if you chant that, so he's not asking anything. So he's asking, keep it simple. And what he's so which the one thing which kind of inspired me, he's asking you to pay it forward. So it's like you cannot change the world overnight, but you could change the world one person at a time. So the so for me, the biggest lesson is like when you are uh, whoever you're working on. So like you find another person, and that person will find another person, and that way you could change the world. So it's kind of a change reaction. And before I say anything, let me also express my deepest gratitude and appreciation to you guys for doing this. Like it is not easy. I understand that, and it is hard. And sometimes there are lots of people like who is going to ridicule you and say, "Oh, this is called this is that," and you're doing a good job, and you keep doing it because the thing is, you are trying to change the lives, and that is more important because in life, uh, like. Uh, there are two kind of people. There are people like who are healthy, wealthy, and successful, and they also like so the biggest benefactor for them is education to entertainment. So these people also they read and entertainment. Then there are the another kind of people also who are unhealthy, unwealthy, unsuccessful in life, and they also have they they're so both the components are same, education and entertainment. But the thing is, what kind of education are you getting? Some people they have, so the kind of education you get, so you go in the one direction or you go in the another direction. So that's where the things we have to make sure whatever education we are doing the right one. So that is taking us in the right direction and taking us where we are changing lives. Like most of the time, as human beings, we are. So I don't know if you guys know the hubris is the word like I am out of India for like almost 22, 23 years. So I think it's for the hubris is for Ghamandi. So the thing is, we think like everything is happening because of us. And I think when we start uh, kind of thinking that way, then I think that is the start of our, uh, in Hindi they call it, that start the pattern of that human beings. Once we thinking about everything is about us and everything is revolving around me, I think that's where things started to go haywire. And so I again I appreciate you guys for doing this. It is not a easy stuff. It's a hard stuff, and sometimes I would say you will hear things which are not pleasant, which are hard, but you keep doing what you are doing because in our lives, as we say, like a life is like a garden, and you want to grow flowers in that garden. So like and the flower, love, compassion, uh, those kind of things, and helping others, empower others, empathize with others, uh, and you take out some of the bad things like from your life. So like the weed is like a wildflowers, and once the weed flowers take over the garden, so they generally overpower the regular flowers. So you want to like you have a pride, jealousy, those kind of things. Take those things out of life. And I think the one thing when I sometimes I get a chance because my wife she's always hearing some of those pravachans from Guruji. I think that is the biggest lesson I take rather than anything else. If you don't get anything, and it is a process. Okay, so the one thing I'm just going to leave you with all of you is this: like most of the time, most folks think they want to take a shortcut. Okay, if the Guruji gave me this month, so how could I get rich? Or how could I get to that next level? Or how could I become famous? It's not about that. I think if that was that,
then he would have become that famous. He would have monetized this thing. But he did not do that. So anytime when you are doing, so you have to keep that in mind, whom you are doing for. You are doing for the next person. You are not doing for anybody. You are doing it for yourself. Okay. So if we change one life, that's good for us. Not we did something favor to that person. We did it for us because that's one less problem in the world. So when you are approaching things, approach that way. Okay. So work with the servant attitude that you are in this world to serve others without any expectation that that person is going to give something in return. So keep that always in mind, because this is important. And I think Guruji, he has given a good platform. You guys are doing a good job, and just keep doing it, and keep spreading and keep changing lives one person at a time. And Jai Gurudev. And I'll be open to take any questions. And if you want some, if you guys like having issues understanding English, I could do mixed, so it might not come out really good, but I'll try to do my best. जय गुरुदेव। Yeah, Gurudev. ये हमारे गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव और गुरुदेव के गुरुदेव हैं ये। इनको 2 सिद्धियां हुई थी और इसीलिए इनकी फोटो से ध्यान लगता है और कुंडलिनी जागरण हो जाता है। कुंडलिनी जागरण होने से ही जो हम मोक्ष की कामना करते हैं, इतनी सारी चीजों को हम सोचते हैं, तो जो भी लोग गुरु को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप एक बार इस मंत्र को करके देखें और गुरुदेव का ध्यान कर कर देखें। ये गुरु सियाग सिद्ध योगा है और सिद्ध योग का मतलब है इसके अंदर सारे योग आ जाते हैं। जैसे कि बहुत से जगहों पे हो रहा है कि पैकेज निकाल देते हैं कि भाई आप आपका ये चक्रास एक्टिव हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ गुरुदेव की फोटो का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इश्यू हो, तो वो सब अपने आप ठीक होता चला जाता है। और मैं शिव कुमार सिंह से जानना चाहती हूँ कि पहले तो इनको एक वो सिस्टर ने जो बताया था कि भाई पहले इनको बिलीव नहीं था, तो मैं वो बात सुनना चाहती हूँ इनसे कि भाई पहले आपको ये लगा कि शायद ये जो फोटो है ये हिप्नोटाइज मतलब करते हैं, तो कुछ ऐसा भी हुआ था, कोई बात हुई थी? Yeah, sometimes most people, so like जैसे आप बोल रहे हो जो है ये इवन जो हिप्नोटाइज का होता है, so some people do that कि भी वो हिप्नोटाइज कर देते हैं। एंड there are some यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है mindvalley.com. So it's run by one Indian guy. He's a Malaysian Indian guy, and um, it's a big organization. So he does all these meditations and those kind of things. And one of the things they do is like they, in some scenarios, भी आपको कुछ चीज रियलाइज कराने के लिए they will hypnotize you. And they're hypnotologists. So they, and these people, they have, if they are out there in the world, I think उनकी कुछ utility है. And the one thing, but after that, whatever I said, so I would say this, like जैसे उन्होंने बोला है जो भी है, सिर्फ मंत्र जाप करने से ही नहीं है। उन्होंने एक बोला ना निष्काम योग। तो आप जब उसको कर रहे हो ना, ये नहीं कि भी जो है I am going to do it because I have this problem, or I want to get this promotion, or I want to get a good education. I think as long as you start doing like a quid pro quo कि भाई आप ऐसा करोगे तो मैं तो ऐसा करूंगा, जो है I think उनका मतलब ऐसा नहीं है। जो गुरुजी का जो मैसेज है, आई थिंक दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। दैट इज निष्काम। आप उसको करोगे देन एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। क्योंकि आप जो है ना, जब एक आप शुरुआत करोगे कि भी मेरे को ये दे दो, तो आपने जो है देन यू सेट द लिमिट। Okay, so there is a higher power. Let the higher power set the limit. Why are you setting the limit when the Guruji is saying if you do it, this thing nishkam, then the possibilities are limitless.
So you want to keep that, just keep it limitless, and don't become swarthy. So don't do it for yourself, do it for others, and then the good thing happens to you. हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कुछ और बताना चाहेंगे शिव कुमार जी? The only thing I would say, like जो like मेरी ज्यादा अनुभूति तो नहीं है अभी, जो जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि जो अभी जब आप जो ये मेडिटेशन है, यू लर्न बाय प्रैक्टिस। तो इसमें ये है कि जो आई एम नॉट गोइंग टू से भाई जो आई एम लाइक सच्चे साधक के भी जो है मेरा तो जो है शुरू से जो है आई एम हैविंग ऑल दी सिद्धीज एंड ऑल दैट स्टफ। नो, आई एम नॉट। आई एम as a human being, we are all flawed, and there are so many things going on in our lives. So like when I am doing the meditation, I still get distracted, so it is hard, and sometimes like other things come into mind if there is something going at work. So how do you I just try to kind of refocus my mind. Okay, I'm doing this, hey, go back there, and then you try to do it, and you try to do it best. It's We are not looking for perfection here, but so that is my goal. जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी इनको जुड़े हुआ थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर इन्होंने जो भी इनके टच में आते हैं तो उनको भी अभी मंत्र दिया और उनकी भी काफी अच्छी अनुभूतियां रही हैं। और आने वाले टाइम में तो काफी लोग जुड़ने वाले हैं, आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक भी अंजू सिंह आएंगी, इनकी वाइफ, जो मेरी सिस्टर भी हैं। तो उनकी तो अनुभूतियां इतनी सारी हैं कि पता नहीं, कि खुद भी कभी-कभी जेलसी फील हो जाती है कि ये कैसे, कि इतनी बड़ी-बड़ी अनुभूतियाँ कि साक्षात शिव के दर्शन हो रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ है। तो नेक्स्ट टाइम हम उनको लेकर आएँगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी सभी साधकों से कि आप प्रचार जोर-शोर से करें, ट्विटर पे करें, और जैसा भी आपका समर्थ है, जिस तरीके से भी आप कहीं शर्माएँ नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, कहीं परेशानी में लगता है, कहीं प्रॉब्लम में है, तो आप गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव की फ़ोटो वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। और हम साधक यही काम कर सकते हैं, बाकी जो कार्य है वो गुरुदेव का है। बस गुरुदेव एक ही बात बोलते हैं कि बस आपने ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है, बाकी का काम मेरा है। और वही हमारा काम है कि हमें कोई भी हमें व्यक्ति प्रॉब्लम में, परेशानी में दिखता है तो हमें गुरुदेव का मंत्र ज़रूर बताना है। क्या पता कि उसके प्रारब्ध तैयार हों और गुरुदेव उसके ऊपर कृपा कर दें और आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद करें। तो बहुत से लोग हैं कि थोड़ा शर्मा-शर्मी में नहीं सामने आ रहे हैं, और क्योंकि नीदरलैंड में भी बहुत सारे लोग हैं कि कर बहुत से लोग रहे हैं, पर आगे नहीं आते हैं या प्रचार डर कर नहीं कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए। और ये हिप्नोटाइज़ वाली बात मैंने इसलिए भी कहा। जैसे आप बोल रहे हो, जी, क्योंकि जो मैंने हिप्नोटाइज़ वाली बात कही वो जी शिव, हाँ जी, आप बोलिए। हिप्नोटाइज़ वाली बात, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रचार करने यूरोप में जाते हैं, कुछ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब किसी और तरीके से ले लिया जाता है कि अगर जो हम फ़ोटो दिखाया तो हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं, कुछ है तो पुलिस कंप्लेंट वग़ैरह, मतलब काफ़ी, तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सके पहले हम इंडियंस को पकड़ें, इंडियंस को ही हम ये मंत्र और ये सब चीज़ें कराते हैं। तो अगर जो कोई हमारे टच में, जैसे कोई गोरा या किसी हम पार्टी वग़ैरह में जाते हैं और जिसके ऊपर हमें बिलीव है, सिर्फ हम उनको दे सकते हैं। ऐसे ओपनली कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं चलते-फिरते कहीं पे भी मतलब गुरुदेव का प्रचार कर दें, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है, बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, कृपया करके ये कोशिश करें कि आपके पास जितने भी इंडियंस हैं, तो आप कम से कम उन तक ये प्रचार, ये फ़ोटो, ये मंत्र पहुँचाने की कोशिश करें। हाँ जी, शिव, आप कुछ बोल रहे थे? जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। So मैं यही आपको सभी को बोलता हूँ कि जो आप जो है ना, यू आप जो है स्टार्ट 1% एट ए टाइम, वन चेंज लाइफ 1% एट ए टाइम। जो जो भी इसमें होता है
and then it becomes a chain reaction. And then जो एक वो बोल रहे हैं निष्काम, so मैं भी एक किसी साधक का वो देख रहा हूँ कि भी जो है continues to feel sensation on Sahastra and divine liquid flows. So the main thing is we don't know everything. So sometimes it is okay if you don't know anything. It is okay to say I do not know. Ask questions. And some like वो बोलते हैं कि जो इंसान है जिसको ज्ञानी इंसान वही है जो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. If that person is ready to accept that, I think that is the biggest thing you could do. If something is not explainable to you, please accept it as is. And some of these things, keep doing the nishkam bhav. I think that is more important. And some of the questions I'm seeing in the chat, I'm a spiritual person, but I'm not a religious person. So some of these questions, they are beyond me. So I cannot answer those questions. But the only thing I could say is, there are so many things. Just keep doing what you are doing. Keep helping your fellow human beings. And that is the biggest service you could do, serving your fellow human beings. And then that is the when you are serving the humanity, you are serving the God. And when you're serving the God, some of those things you're talking about, those things will take care of itself. Jai Gurudev. हाँ जी, जय गुरुदेव। आज का हमारा ये प्रोग्राम आधे घंटे का ही रहने वाला है और नेक्स्ट टाइम अंजू जी को लेके आएंगे। उनकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, तो हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मेरी खुद की भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है 1 साल से शेयर भी नहीं की है। और अभी लास्ट 2 मंथ की बहुत ही अच्छी अनुभूतियां जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का प्रचार करें और जो भी अच्छे हमारे साधक होते हैं उनकी वीडियोस को ज़रूर आप शेयर किया करें, क्योंकि बहुत आगे लोग उससे मोटिवेट होते हैं। हमारा मकसद लोगों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। पुराने साधक जितने जुड़ चुके हैं, मतलब हो चुके हैं, पर नए-नए साधकों को जोड़ो, क्योंकि हम लोग शायद उन्हीं के बीच में आस-पास घूमते जा रहे हैं। और एक चीज़ और है कि हम लोग ट्विटर पे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़, आज हमारा जो रिज़ल्ट आया था ट्विटर पे, तो कम से कम हमारी 2 करोड़ लोगों की रीच पहुँची थी और उसमें सिर्फ़ 119 लोग थे ट्वीट करने वाले, रीट्वीट करने वाले। तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे, कल को ये शिकायत ना रहे दुनिया में कि ये मंत्र किसी व्यक्ति के पास जाने से रुक गया। हमारा मकसद ये है कि हर व्यक्ति के पास ये मंत्र जाना चाहिए, चाहे वो करे या नहीं करे। और जिनका भी प्रारब्ध होगा उनको ही ये मंत्र मिलेगा, वही उस रास्ते पे जुड़ पाएँगे। पर हमें सबको लेकर चलना है, सबको साथ जोड़कर चलना है। तो सबका साथ होगा तभी दुनिया में बदलाव आएगा, पूरे विश्व में बदलाव आएगा, सबके अंदर शांति रहेगी। और ये मंत्र तो अपने आप में है ही इतना बड़ा कि जब हमारे अंदर शांति, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर, जो हमारे अंदर वही ब्रह्मांड में। अगर हमारे अंदर शांति है तो ये समझ लो कि वो सारी एनर्जी इस ब्रह्मांड में घूम रही है, पूरी दुनिया में घूम रही है और सबका मकसद एक ही है, पूरे विश्व में शांति का होना। और गुरुदेव का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हर व्यक्ति सुख और शांति में जिए। जय गुरुदेव। हाँ जी शिव, आप कहिए। बस मैं यही बोलूंगा कि जो है जैसे आपने बोला, पे इट फॉरवर्ड. So that's the thing, like so you got the mantra, then you pass it to somebody else, and that person pass it to somebody else. So it's not like how many people are. So if you are doing your job, then the other person will do their job, and I think that's how you could change lives. And sometimes, like, we all want to be, okay, I want to become inspirational, but sometimes you have to be inspired by somebody, and then if you do that, you work with that mindset, you will become inspirational one day. But just accept it what it is, keep it short and keep it simple. And that's what, like a Guruji ka jo mantra, it's not hard. So keep it short, keep it simple, and
pay it forward. I think that is something you should all do, and it's a you are trying to change the humanity. Keep doing it, and this is something I think it's not easy. Sometimes people will ridicule you, they will make fun of you. It is okay, because that you cannot control the outside noise, but you could control what you could control and do what you could do. Because you're not asking anything from anybody. You're trying to pass something which is kind of centuries old. And most of the time, as a human beings, we have feelings, and uh, so it is okay to be vulnerable. Sometimes we feel so that is okay. Even if you have followed Mahabharata, when uh, uh, then Arjun was about to go to war against Karn, so his brother said, "Hey, Bhratashri, you don't have to worry about it, because you have gone war against Gurudev and Tach, like Bhishma. Then, because those guys, they were much bigger warriors than Karn, and then he used a derogatory word against him. And then he said, like, so you should not be worried about the Sudputra. And he said, no, if Bhratashri Duryodhana had made him the army chief of his army, then this guy, he is a worthy opponent. And the folks who are not afraid, so the word he used was, they are the wooden warriors. So काठ के योद्धा. So यदि आप ह्यूमन बीइंग हो, यू हैव इमोशंस, एंड आप के अंदर इमोशन है, तो कभी कभी आपको डर फील होता है, विच इज ओके. So you don't have to be afraid. And then sometimes like we are always afraid. कभी हम बोलेंगे कि मेरे को, if somebody asks me, I don't know, so like we want to be look wise, and we have that full of wisdom. No, nobody cares. If you don't know something, ask. At least there is a chance you will get that answer. If you don't ask, then even you lose that opportunity. So don't lose that opportunity, and treat everybody with dignity and respect. If you want to be treated like treated, you being treated, so treat everybody like that, because they just don't get into this caste, creed, and all that stuff. Uh, everybody is equal, and just spread love. And this, we have a short time on this earth. We should not be getting into these petty things where, like, this is mine, this is that, and all that stuff. And anywhere we could make a difference, we should make a difference. And that should be our goal, because so make a positive, be a change you want to be, and be a positive change, not a negative change. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा शिव, आज आप हमारे साथ आए और इतना समर्पण की, इतनी अनुभव अनुभूति ना होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत तो साधकों में होती है कि पहली बार में समर्पण हो जाए वही व्यक्ति सामने आ सकता है, चाहे अनुभव हो या नहीं हो। अनुभव अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, गुरु के प्रति समर्पण होना ही बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। कि नहीं तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं, पहले उनको कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, अनुभव अनुभूतियां होने चाहिए, तब कहीं जाके वो जुड़ पाते हैं। पर आपके समर्पण को देखकर आपको जय गुरुदेव, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में आए। और उम्मीद है क्योंकि अभी आप भी प्रचार कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को आपने बताया है, तो वो भी आगे आएँगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ अंजू जी आएँगी, जो शिव कुमार सिंह जी की वाइफ हैं, तो उनके तो बहुत सारे अनुभव अनुभूतियाँ 2 महीने में काफ़ी हो गई हैं। उनको भी 2 महीने अभी जुड़े हुए हैं। अभी जितने भी हमारे पास जितने भी साधक आने वाले टाइम में हैं, वो सारे कम से कम 2 महीने के अंदर-अंदर कम से कम 50-55 लोग हैं जो जुड़े हैं, और उनके बहुत अच्छे अनुभव अनुभूति हैं। और हमें सभी को लेके ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो किसी के अनुभव अनुभूति लेके आएँ। आप प्रचार प्रसार करते हैं तो आप वो भी आपका एक एक्सपीरियंस है, आप उनको भी लेकर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, इससे और भी लोग मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हम लोगों का साथ दिया और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं।
और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। तो शिव कुमार जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। Jai जय Gurudev. गुरुदेव। Yeah, in सभी the को end, जय। yeah, so in the end, I just want to express my deepest gratitude and appreciation to all of you for doing this, because people like us, yes, we are here for half an hour, and but you are working on this continuously, so you do uh, uh, do a, I think, very good service to the community, and like personally, I do appreciate it, because it's not easy, and you deserve all our respect and gratitude, because without gratitude, I think there is nothing in life. So I'm grateful to you guys, and just keep doing what you are doing. Uh, keep changing the humanity, and keep changing lives one person at a time. You know, as I said, education is the biggest multiplier, and you are spreading that education. And sometimes I think create maybe something which could be beneficial, spreading your messages, like when you create that educational content. I think entertainment is the biggest connector, so like have some kind of maybe musical dimension also. So I think some of your Siddhi Yoga site you have, I think you could uh, include some of that content on your site. And I, as I'm an IT person, so anytime you need anything IT related, I think you could through Kavita Ji or what. So you could reach out to me, and I would be more than happy to help you out, because some of the technology stuff you are doing, that is my expertise. And locally in here also means like in India. Uh, that most people thinks like the folks who live in abroad, like everybody is super rich and wealthy, and they all drive Mercedes and all that stuff. But life is not like that. So in these like even in the European countries or in America also, there is a poverty, and there are folks who live in these communities who are not as fortunate as other folks. So we do some of that work here too, because it, that's where we also spread our culture. So to like there are folks who are hungry, we feed them during this Christmas and Thanksgiving time. So we do those kind of things. So please feel free to reach out uh, in any way. It's like I'm a very small person, but like any technology related issues, you need any help, I I could be helpful. I would be more than happy to. So again, Jai Gurudev, and again, thank you for giving me the opportunity. I'm humbled and grateful to you. जय गुरुदेव। शुक्रिया शिव जी आपका। Thank you. जय गुरुदेव।